gathering there at Nagaland. Mr. Timjem Nang Imna along, the very dynamic and very president of the Nagaland party, Shri Sarvanand Sonwalji, the central minister and a senior leader, Shri Shiv Prakashji, our organizing general secretary, Shri Samvit Patraji, who is the coordinator of the Eastern states, Shri Nalin Koliji, who is the in charge of Nagaland, Shri Rituraj Sinhaji, who is the co-coordinator of the Northeastern state, Phonggon Konyakji, the member of the Rajya Sabha and my colleague in Rajya Sabha, Abhay Giriji, who happens to be the organizing secretary of Nagaland, and their respected gathering, who have gathered for this inauguration of the state party office at Upper Agri, Kohima. Friends, we all know that today is the greetings to the Sumi community on the occasion of the Ahuna festival. We all know that the Prime Minister Shri Narendra Modi ji this year on the Independence Day gave his speech from the ramparts of Red Fort, and he had talked about Nari Shakti. When I joined the friends from Nagaland, it becomes important to certainly say one thing, that our S. Phonggon Konyak, who is the first woman Rajya Sabha member from Nagaland. This itself means that Bharatiya Janata Party, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, has been focused to give or to go forward in the women empowerment. And in the northeastern state, especially Nagaland, giving the opportunity to a women member to be elected as the Rajya Sabha member speaks volumes about our intention. When I talk about Nagaland, we all know that it is a very distinct culture which we have to understand. Nagaland is home to 16 tribal communities. We also know that massive development of Northeast under Prime Minister Modi ji has taken place. We also know that BJP government in the 4 of the northeastern states are there. And today in the office inauguration, I feel it is my honor that today I am inaugurating one of our biggest offices in Nagaland. I am told that it spreads in over 3,500 square feet area. It is a capacity of holding more than 500 people in a hall. And also I am told that it is an office which has got full modern facilities to facilitate the people and facilitate the party workers for working for the Bharatiya Janata Party. We all know that office is not only an office, it is a Sanskar Kendra where a lot of formal and informal education takes place. And because of the formal and informal education, the sanskaras develop. And because of the sanskaras, we are there to dedicate ourselves for the people of Northeast, for the people of the country, and especially for the people of Nagaland. We all know that under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji, we have been talking about Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. I would like to share one incident which took place. When Prime Minister Modi became the Prime Minister of the country in 2014, there was a function in 11 Ashoka Road. And at that point of time, Amit Shah ji became the new president of the party. And Prime Minister Modi asked him that what plans do you have to strengthen the party?
And then he suggested us that we should have at least one good office in every district of the country. His advice was taken seriously by Amit Shah ji, and we decided under Amit Shah ji's leadership that we'll go for a mega plan. All state headquarters should have a good BJP office, and all district headquarters should also have good BJP office. I would like to share with you that out of 512 planned offices, 237 offices are completed. And this is the 237th office which I am inaugurating. And you would also be happy to note that 153 Bharatiya Janata Party offices at the district level and state level is under construction. Friends, we have gone a long way in strengthening the party, improving its capacity, involving people, enrolling people, and that is why we are the world's largest political party. And when I talk about, I share with you that 1.8 million people are 180 million people are our members. That we have to understand. The BJP's growth in Nagaland, with the massive support of the people of Nagaland, we can say that from 1.8% of vote share in 2013, we have reached 15% of vote share in 2018. And it is happy to note that now we have a double engine government. We have grown from pillar to post. And we can say that our primary membership was more than 3.3 lakh people in Nagaland. Today I am also launching our membership drive in Nagaland. I would like to congratulate Mr. Patton. I would like to congratulate Imna Along for the interest they have taken for expanding the base of Bharatiya Janata Party. And the intention is that our mass base, our support base, our ideological base should expand. And with this motive, to increase the foothold of our party in the state. I am told that you have a target that at least 4 lakh active members should be there. I congratulate you, and I also give my best wishes to you for this membership drive. And I do not only expect, I am confident that you will go beyond the target of 4 lakh in enrolling the membership that I can surely share with you. The drive will be conducted, I am told, in 60 mandals. A missed call number has also been suggested, and I would like to repeat that number: 829-829-6060 to join BJP. This is a unique way which Nagaland has started, that you give a missed call, and through that missed call, 829-829-6060, if you press the button and go for this number, you will certainly be enrolled as the Bharatiya Janata Party, and further they will ask for the details which you are going to give to them. Here I would also like to request to the people of Nagaland that I would request that people should join the Bharatiya Janata Party of the Nagaland unit, because it matters and nation goes further. Join BJP for strength and prosperity. Join BJP for progress and unity. Join BJP because we do politics for the purpose of Ma Bharati Seva. We are the persons who believe in devoting ourselves, sacrificing ourselves for the people of Nagaland, for the people of Northeast, for the people of the country. And so I request the people of Nagaland that we should participate in this membership drive and become the members of Bharatiya Janata Party. We also know that the BJP party is the party of Karyakarta.
The workers are the ambassadors of the party. The workers are the impression of the party. You see, Bharatiya Janata Party, the image of the Bharatiya Janata Party is always decided by the standard of the worker of Bharatiya Janata Party. The image of Bharatiya Janata Party is always decided on the activities of Bharatiya Janata Party workers. The image of Bharatiya Janata Party is always decided on the programs and policies being implemented by the workers of the Bharatiya Janata Party. And the quality of performance is also one of the very important factors. So friends, I feel that we should utilize the services of this office. We should go for a good research wing. We should go for a good ideology. We should go for a good library, e-library. We should have information, anything under the sun. That should be our capacity of the party and our library. We should, as I said, we should go for a good research work. We should also engage people who can give us advice how to develop the vision for the people of Nagaland, and also to take care that BJP is a cadre-based party with an ideological background. So we have to also fine-tune our cadres with the ideology. We will have to sync with it, that the cadre syncs with the ideology. And one thing here I would like to share, that the other political parties are family parties. The family is the party. But here in Bharatiya Janata Party itself is a big family. So we are all family members. This is the difference. It is a family party. Here every person is the member of the big family of the party. That we have to understand. And friends, here I would like to share with you that Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay ji, Atal ji, Advani ji, Kushabhau Thakre ji, Murli Manohar Joshi ji, all stalwarts have come through, who have followed during their time through this organizational methodology. Sir, here I would like to also share with you that the Bharatiya Janata Party believes in Sarvavyapi, all-inclusive, Sarv Samaveshi, all-pervasive. This is what we plan, that we should involve everybody of the society, every section of the society. Or no caste, no creed, or no religion. All should be involved in the participation of Bharatiya Janata Party. So, sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. Then only is going to be a truth. Then only it is going to be a reality. That we have to understand. Friends, here I would also like to share with you that Bharatiya Janata Party is a political party. But it does not have only a political focused program. We are more than that. We believe in service also. We believe in social work also. We believe in the issues related to environment. We are the organization which works like Seva Hi Sangathan. During the Corona time, every political party went into isolation. Every political party, some political parties were in ICU. Some political parties were never to be seen. Some political parties were seen only on Twitter and Facebook. But crores of our Bharatiya Janata Party workers, under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, under his direction, we started a program called as Seva Hi Sangathan. And lakhs of workers worked for Seva Hi Sangathan and served crores of people during the Corona crisis, that we have to understand. And we feel proud of it. And I feel proud that the workers of Nagaland, they also did not stay at home. They came out and they served the society to the larger extent and distributed masks, distributed ration kits, distributed food, distributed fruits, and they also took care of the people, older people, for giving them medicine. So friends, we are in a party which believes country first, party second, and self last. That we have to understand.
Here I would like to also emphasize about our political ideological journey. Our ideological journey started in 1950s when the Jal Sangh came into existence. And later on in 1980 it was converted into Bharatiya Janata Party. We have a long 71 years of ideological journey. And in this ideological journey, I can say with confidence that all the political parties of this country have been subjective. They have changed their stand from time to time. They have changed their stand and ideology, keeping the fruits which they are going to get out of it. They kept on changing their ideologies. They kept on changing their styles. They kept on changing their stands. But it is Bharatiya Janata Party. In the last 71 years of ideological journey, we are the only party which has been ideologically consistent, this I can say. What we said in 1951, we stand by even in 1922 and 2022. What we said in 1960s, we stand by even in 2022. So it is a consistent political party ideologically which is working. BJP's contribution towards nation building, nobody can forget, nobody can ignore. You see, in 1952-53 we said, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा. Way back in 1952, Shyama Prasad Mukherjee laid his life, dedicated his life in 1953, that one nation, one constitution, one nation, one prime minister, one nation, one flag. And he dedicated himself, he sacrificed his life for abrogating Article 370. You will be happy to note that it was in 2019, August, 6th of August, when the Article 370 was abrogated and Jammu Kashmir constitutionally became an integral part of the constitution and integral part of the country. This is how we work. We believe in good governance and development. That is our motto. So you will always find wherever there is a Bharatiya Janata Party government, we believe in good governance, delivery, last mile delivery, and development. And here I can say that after 1986, we came out with a new education policy of 2020. This education policy is such a diverse country, with taking everybody into fold and taking everybody's suggestions. I can say that this education policy is developed in such a way that it becomes affordable to common man. This education policy gives equal opportunity to all. This education policy is acceptable to all. This education policy gives education in the mode of language is mother tongue. That we have to understand. Friends, this education policy has brought a sea change in the field of education. And in coming times you will find the task force are working at the state level. And in times to come, certainly it will be not India's education policy, but it will be Bharat's education policy. It will be a policy where people from Nagaland will be able to read, write in your own mother tongue, and that will really give the opportunity for the people to grow and be educated. I would also like to share with you about the National Health Policy, which came out in 2017. It talked about preventive, promotive, rehabilitative, and cross-referral between the various sciences, Ayurveda, homeopathy, yoga, allopathy, all together under one roof. So it became a very different, it was preventive, promotive, curative, palliative, this type of health policy, a comprehensive health policy. It was not only curative, we should also go for prevention. So for that, what steps have to be taken? So all that has been taken care, and I am happy to note that Nagaland is also going with the new health policy that is
a welcome step. Friends, when I'm talking about the good office which we have inaugurated just now, and which will be of use to you, I would also like to share that Prime Minister Modi has changed the political culture of the country. There was a time when people used to forget, they used to give slogans, and after one election, another election, they used to come out with new slogans. But Prime Minister Modi gave a government which was proactive, which was responsive, which was responsible, which always took care of the people, and so we can say that politics of report card came into existence. There was always a word which was called as anti-incumbency. That anti-incumbency was converted into pro-incumbency. A new word was coined, and that was pro-incumbency. Now we are seeing successive governments. When we get re-elected, it is because of the pro-incumbency which takes place. And we also believed in the politics of development. So that has also been given due weightage, which I would like to share with you. Friends, the centuries devastating pandemic came in 2020, which is known as Corona. I have been a health minister at the union level and also at the state level. I know that this country has suffered a lot on the health issues. We have seen that this country, the vaccine for smallpox came after 25 years to India. It was invented, but it came 25 years later into India. We have seen that tetanus, the vaccine for tetanus and the medicine for tetanus came after 30 years. We have seen that the polio drops reached India approximately 28 years later. We have seen that Japanese encephalitis, the medicine was invented in 1906 in Japan, and it came to India in 2006, that is 100 years later. But here I would like to share with you that Corona came, and the first case was in January 2020. On April 20th, Prime Minister Modi instituted a task force and also enthused our scientists and gave them financial support for research of making a vaccine. And again, I am happy to share with you that during a short span of time of 9 months, our scientists, because of the support given by Prime Minister Modi, they came out with not one, but 2 indigenous vaccines by our scientists to this country. Two vaccines. And I'm also happy to share with you that we have the proud privilege to say that ours is the party, ours is the nation which has undergone the largest and the fastest vaccination program, and 217 crore vaccines have been administered to 130 crore people. This is a record in itself. We congratulate Honorable Prime Minister, and I also congratulate my workers who dedicated themselves in the vaccination program, and in this short span of time of 3-4 months or 5 months, we were able to go for 217 double dose vaccines, and we have been always also been able to give vaccines to 100 countries under Vaccine Maitri program. And I'm also happy to note that in Nagaland, 17.3 lakh vaccination has been done. 17.3 lakh vaccination has been done. Friends, when I talk about Northeast, the contribution of Modi ji, we all remember. He has brought a sea change, and many steps have been taken. I remember the peace accord, the accords like Naga Peace Accord in 2015, the Tripura Peace Accord in 2019, the Bodo Peace Accord in 2020, the Bru-Riang Peace Accord in 2022, the Karbi-Anglong Peace Accord in 2021, the Assam-Meghalaya Boundary Agreement in 2022. The outcomes of these peace accords is that today 66% of the
Armed Forces Special Protection Act has been removed from Northeast India. That we have to understand. There is a decline of 80% of insurgency. There is a reduction of 74% in militancy incidents since 2021. The disturbed area notification has been withdrawn from 15 police stations and 7 districts in Nagaland. That we have to understand. This is what we understand, what we mean by bringing peace and peace accord. For the northeastern region, I am happy to share with you that All India Institute of Medical Sciences is coming up at Guwahati. 23 air routes are operationalized under UDAN program in the northeast sector. The first ever National University of Sports has been established in Manipur. And I am happy to share again with you. You all come from the hilly terrain. I also come from a hilly terrain of Himachal Pradesh. We all know that bamboo was classified as a tree. And because bamboo was classified as tree, we were not able to take the benefit of bamboo. But under the bamboo mission, Prime Minister Modi made it clear that bamboo will be classified as grass, and because of that, the bamboo mission has been successful and it has benefited the northeastern region to the maximum. If I talk about the development taking place for the connectivity and connecting the northeastern region, India has the longest bridge, Dhola-Sadia bridge. We also know that connecting Assam with Arunachal Pradesh has been done. We also know that PM Modi has visited the northeast at least 50 times. This is a record for any Prime Minister visiting 50 times in such short span of time. I would like to share with you that 4,016 kilometer road projects are currently ongoing in northeastern region. Around 2,000 projects worth of rupees 22,000 crores has been sanctioned for your region. The NH, National Highway Network in the state today has been extended. When I say state means Nagaland, has been extended from 880.68 kilometer in 2014 to 1,547 kilometers. The Dimapur railway station was inaugurated more than 100 years ago. That was in 1903. But more than 100 years later, it was Modi ji who gave Nagaland the second railway station, which is known as Shokhuvi, that we have to understand. This is connectivity. This is development. This is for the people of Nagaland. This is for the people of northeastern region. That we have to understand. I am also happy to share with you that 3.3 lakh people have been benefited under Vandhan Yojana. Our tribal friends who work day in and day out, their economic development should also be taken care. And for that, the Vandhan Yojana has been very handy to the tribal people and for their financial support. Recently, some 3,235 crore for highways in Nagaland has been spent. Earlier, 55 works of length of 1,063 kilometers at a cost of 11,711 crore was approved. Friends, 667 kilometers were added in the National Highway Network in Nagaland during the last 6 years, a growth of nearly 76%. Nagaland got its, as I said, got its second railway, which was in Shokhuvi. And when I talk about 90 kilometer long broad gauge route from Dhansiri in Assam to Zubza in Kohima, we have to understand how development has taken place. If I talk about health infrastructure, I would like to share with you again, and I would like to communicate to you that 100 crore rupees investments for the Ayush health sector in Nagaland is being done. Mr. Sarvanand Sonbal ji is there, he is sitting there. I would like to thank him and congratulate him to give this initiative to the people of Nagaland. He has also, the Ayush hospital in Kohima has also been inaugurated. One Ayurvedic college will be developed worth rupees 70 crores in Longlang,
that we have to understand. A new medical college in one most backward and farthest district will be there. As we all know that Antoday is our spirit, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, 4,000 artisans of Nagaland have been rewarded and they have been supported. Ayushman Bharat, giving a family health coverage to 10 crore 74 lakh families. 2.3 lakh eligible families are from Nagaland who are getting 5 lakh rupees health coverage every year. Year by year, that we have to understand. In Pradhan Mantri Awas Yojana, when 3 crore 60 lakh houses have been built, 55,000 houses have been built in Nagaland also. When I talk about Swachh Bharat and when I talk about the toilets, the Izzat Ghar, the life with dignity, 11 crore toilets have been constructed. And in Nagaland, 1,40,000 toilets have been constructed. In Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, food is being distributed to 80 crore people. And I would like to inform you that 14 lakh beneficiaries are from Nagaland. If I talk about Ujjwala gas connection, 9 crore cylinders have been distributed. 65,000 cylinders have been distributed in Nagaland. Friends, at the end I would like to share with my workers that we have to remember Modi ji's 7 sutras for the BJP worker. The first sutra is Seva Bhav. We should work with the intention of service. The second intention or the second sutra is Santulan, means balance. We have to develop a balance. The third sutra is Sanyam. That means we should have control on ourselves. We should be, our posture should be, it should be controlled and we should have patience. We should have Sanyam. The fourth sutra is Samanvay. That means we have to maintain a uniformity and balance between all sections of the society. The fifth is Sakaratmak, which means positivity. And the sixth means Samvedna. Samvedna means that we should have feeling for the others. We should always take care about others. And the last and the seventh is Samvad, which means communication. If our workers go by these 7 sutras, the party is going to grow and go further ahead. Friends, the Modi ji's dream is big. He wants that in short span of time we should do maximum service to the nation, and keeping for that factor, I appeal to my workers that we have to rise to the occasion, we have to work for that, and we have to see to it that we become the part of this historical change which is taking place under the leadership of Prime Minister Modi, and see strong India, healthy India, developed India, and developed India, that's what I would like to say. And always work with the Seva Bhav. Friends, in the end, once again, I would like to congratulate the President of the party, Imna Along, our Deputy Chief Minister, Mr. Y. Patton, all my ministerial colleagues, and Abhay Giri ji, and also the party workers of Nagaland at Kohima, who have really worked hard to make this office, and I feel privileged to be a part of the inauguration of this Bharatiya Janata Party magnificent office. I'll make a physical visit when I come to Nagaland. Once again, thank you for giving me a very patient hearing. Thank you very much. भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अभी जिनके अध्यक्ष बनने के बाद हमको 2 प्रकार की सफलताएं मिली। एक सफलता मिली, हरिद्वार जनपद में अभी पंचायती चुनाव हुए और चुनाव में संपूर्ण रूप से सारे हमारे ब्लॉक प्रमुख, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख नीचे तक की सारे ही प्रतिनिधि
भारतीय जनता पार्टी के विजयश्री हूँ और दूसरा जनपद रुद्रप्रयाग का जिला पंचायत का अध्यक्ष पुनः यहाँ पर निर्वाचन हुआ। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो समय समय पर लगातार इस क्षेत्र की चिंता करते, चाहे वो गौचर का क्षेत्र हो, चाहे वो गैरसैंण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों की लगातार चिंता करने वाले, अभी आप सब लोग देख ही रहे होंगे तमाम प्रकार की बातें उन्होंने यहाँ से विकास के संबंध में रखी हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भोपाल राम कंटा जी, हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका हमारी दीदी आदरणीय शैला रानी रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई रमेश प्रसाद मैकुरी जी, इस नगर पालिका की अध्यक्ष व मेला समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय अंजू बिष्टी जी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी रावत जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गौचर श्री जयप्रत रावत जी, पूर्व विधायक थराली बहन मुन्नी देवी शाह जी, हमारे सामने बैठे हुए भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष नवीन नवानी जी, मंडल अध्यक्ष पुष्पा पासवान जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गोपेश्वर भाई गजेंद्र रावत जी, अध्यक्ष डीसीबी चमोली राकेश डिमरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विनोद नेगी जी, सदस्य जिला पंचायत चंद्रकला तिवारी जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा देवेंद्र नेगी देवा भाई, हमारे अध्यक्ष युवा मोर्चा जितेंद्र बिष्ट जी, पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हरक सिंह नेगी जी, संदीप रावत जी, हिमानी वैष्णव जी, अध्यक्ष नंद प्रयाग एवं इस मेले में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और मेला समिति के हमारे अध्यक्ष व कलेक्टर श्री हिमांशु खुराना जी, एसपी चमोली श्री परमेंद्र डोभाल जी एवं सभी मेला को आयोजित करने वाले हमारे सभी अधिकारीगण, सभी लगे हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, आयोजक मंडल, मैं सबसे पहले तो मैं बाबा बद्री विशाल जी को और इस पवित्र भूमि जहाँ गोपीनाथ जी विराजमान हैं, जिसकी शोभा फूलों की घाटी और होली के विहंगम दृश्य बढ़ा रहे हैं हेमकुंड साहब, जहाँ अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने माणा यात्रा के दौरान, केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा यात्रा के दौरान जिस हेमकुंड साहब की नींव रखी है, अब हेमकुंड साहब जाना भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक का अब रोपवे बनने जा रहा है। वहाँ की यात्रा हमारी बहुत ही सरल होने जा रही है। सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश देने वाला हेमकुंड साहब और हमारा बाबा बद्री विशाल का एक दरबार, जहाँ संपूर्ण भारत के लोगों की आस्था है, संपूर्ण दुनिया की आस्था है, हम सभी को कहीं न कहीं ऊर्जा प्रदान करता है, अपना आशीर्वाद देता है। मैं यहाँ पर आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि ये 70वां मेला है। उत्तराखंड में गोचर मेला पहली बार 1943 में आयोजित किया गया था। तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को आयोजित किया जाता है और वर्ष 1943 में जब ये मेला प्रारंभ हुआ, उस समय इसके पीछे हेतु था भारत और तिब्बत के बीच व्यापार को बढ़ाना, मैत्री को बढ़ाना, और ये व्यापार खुला था और हमारे यहाँ से व्यापार मुख्य रूप से ये मेला और एक और मेला
इस मेले के बाद मुझे सीधे ही वहाँ भी जाना है। ये जहाँ गोचर का मेला तिब्बत और भारत के बीच में मैत्री और व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से खोला गया था, वैसे ही एक मेला जोलजीबी का मेला जो सीमांत क्षेत्र नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वह भी भारत, नेपाल और तिब्बत इनके बीच में सदियों से व्यापार को बढ़ाने वाले मेले के रूप में प्रचलित था। और हमारे जो सौका थे उस समय में भौतिया जाति जनजाति के लोग उनके द्वारा किया जाता था, जो हमारी तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्रों में बसे थे। और अपने जो उनके परंपरागत रूप से कलात्मक हस्तशिल्प के साथ साथ जो ऊनी उत्पाद, बहुत अच्छे दंड बनाते थे, बहुत अच्छे चुटके बनाते थे, बहुत अच्छे शॉल बनाते थे। और मैं सच बताऊं तो कल मैं पिथौरागढ़ में था, तो मुंगसैरी क्षेत्र से, वहाँ मक्कोड़ से एक बहुत अच्छा शॉल बना के लाए थे। और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे शॉल कुछ और बना लीजिए। जब मैं अपने देश के बड़े लोगों से मिलने जाता हूँ तो उनको मैं ये शॉल भेंट करूँगा और बताऊँगा कि हमारे क्षेत्र के लोग कितना अच्छा हस्तशिल्प के शॉल बनाते हैं, अन्य जो हस्तकला के काम करते हैं। और निश्चित रूप से इन सबको एक अच्छा मार्केट भी मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो माड़ा के अपने संबोधन में कहा कि जितने भी हम धार्मिक यात्राएं करते हैं, पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि वह लोग धार्मिक यात्रा का 5% जो कुल खर्चा होने वाली उनकी धनराशि है, उसका 5% जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान भाई जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अनेकों समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के काम करते हैं और तमाम प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद। उन्होंने कहा कि आप उन उत्पादों को खरीदिए। मैं किसी को आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हम सब से कह रहे हैं कि ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने के लिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने के लिए, उन सभी को अगर हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और एक से एक अच्छे उत्पाद, अभी दीदी लोग हमारे यहाँ पीछे स्वागत गीत गा रही थी और उस दिन भी गा रही थी, जय जय हो बद्री, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमालय। बहुत ही शानदार वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए उनके साथ। और मैं देख रहा था कि बिल्कुल एकदम खो गए और बल्कि उनको इशारा करना पड़ा था कि अभी गलत पड़ रही है। उस समय में जब हमारी दीदी रामायण का वहाँ पर पाठ कर रही थी, रामायण का, आपको थे ना वहाँ महेंद्र जी। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद गोचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किए जाने लगा है। यहाँ विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे राज्य के प्रमुख मेलों में से, और मैं तो यहाँ देखा तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। और इसमें सरकार के भी सभी विभागों के स्टॉल लगे होते हैं, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार की जो योजनाएं हैं उनके भी प्रचार प्रसार का एक बड़ा माध्यम हम लोगों को इन मेलों के माध्यम से मिलते हैं। और मेले हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह हैं, जो जीवन में उत्साह, ताजगी लगातार भरने का काम करते हैं। और मैं सच बताऊं तो जब मैं छोटा था तो मेलों में जाने के लिए कई दिनों पहले से मैं सोचता रहता कि मेला आने वाला है। और मेला भी नहीं कहते थे तब, मेला तो एक बड़ी बड़ी वो उसको कहते कौतिक कहते थे। कौतिक में जाने के लिए पहले से हम सोचते थे कौतिक आएगा, जाएंगे मेले में, झूला झूलेंगे, मेले में ये करेंगे, मेले में जलेबी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, जो हमको कभी नहीं मिलती थी। वो मेलों में ही मिलती थी या कभी कभी साल में त्योहार होते थे। अब तो बिल्कुल समय बदल गया है। अब जो है हम लोगों के सामने पूड़ी, कचौड़ी, हलवा ये आता है तो
हम लोग खाते ही नहीं और आजकल के बच्चे भी नहीं खाते हैं। उस समय में तो हम सोचते थे कब त्योहार आएगा, साल में एक बार, कब मेले आएंगे, कब हलवा बनेगा, कब पूरी बनेगी, कब सेल बनेंगे, वो चावल वाले जो होते हैं ना, सेल क्या बोलते हैं, यहाँ तो बोलते हैं अरसे, अरसे। और उस समय में जहाँ आज तो देखिए इतनी सुविधा है, हर जगह गांव गांव में फोन हो गया, संचार की सुविधा हो गई, आने जाने की सुविधा हो गई। और उस समय में ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सामाजिक ताने बाने को बुनने में, लोगों को एक दूसरे से मिलाने में मेले बहुत मदद करते थे, जिन्होंने हमारा सामाजिक दायरा, मिलने के भी एक स्थान होते थे कि मेलों में ही मिलते थे, कौतिक में ही मिलते थे। जब इस प्रकार के आयोजन होते थे उस समय हमारा सामाजिक और व्यवहारिक दायरा बढ़ाने का काम भी मेले करते थे। हमारे देश में विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले, अभी अनिल जी बता रहे हैं, जैसे 8वां मेला होगा, 9वां मेला होगा, और इतने मेले हैं, और सबकी इच्छा होती है कि हम लोग उन मेलों में पहुंचे। लेकिन समय की कई बार इतनी ज़्यादा पहले से लगे हुए कार्यक्रम होते हैं, कुछ सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कुछ हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसके कारण से सब जगह पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके बीच में आया, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। और ये सांस्कृतिक जो मेला हमारा गौचर का है, ये मेला हमारा विशेष है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति की छटा बिखेरने के अलावा यह मेला यहाँ की जनता के व्यापारिक अवसरों को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की में चहल पहल को देखने में, इस मेले के अंतर्गत जो झांकियाँ हैं, उत्तराखंड की विशिष्ट एवं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इन मेलों के माध्यम से जहाँ हमारी लोक संस्कृति, हमारे लोक नृत्य, ऐसे तमाम जो हमारी संस्कृति में सदियों से जिसको हमारे पूर्वज करते आए हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का भी काम ये मेले करते हैं। और मैं ये मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ, जानता हूँ, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोक पर्व हैं, वो हमारी एक पीढ़ी तक ही न रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। इसको लेकर हम लोग देखिए लंबे समय से इगास मनाते थे। एकादशी के दिन कहीं पर जो दिवाली के दिन नहीं मिल पाते थे, एकादशी के दिन मिलते थे। अलग अलग रूप में मनाते, कहीं बूढ़ी दिवाली के रूप में, कहीं एकादश के रूप में, कहीं देव दीपावली के रूप में, अलग अलग उसके स्वरूप है। इस बार हमने तय किया था कि हमारा इस पर्व जो सांस्कृतिक रूप से हमारे पूर्वज मनाते आए, उसको हमारी नई पीढ़ी भी जाने और धूमधाम से मनाए। इसलिए हमने तय किया कि दीपावली के 1 दिन के 2 दिन के अंदर ही इस बार हम सार्वजनिक अवकाश पहले ही घोषित कर देंगे, और हमने पहले घोषित कर दिया, जिससे कि दूर दूर से लोग पहले से ही जो है अपने घरों में आने की योजना बनाई लोगों ने। और इस बार मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत धूमधाम से ये इगास पर्व मनाया गया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के द्वारा लगातार उत्तराखंड के उत्थान के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, आज हमारा जो बजट है, हम चाहते हैं वो बजट 2 गुना हो जाए, वह बजट 3 गुना हो जाए, जिसके कारण से कभी हमको ये सोचना न पड़े कि अनिल नौटियाल जी कह रहे हैं गोचर में जो है उच्चीकृत यहाँ पर केंद्र बना दीजिए, उसकी हम धड़ाधड़ घोषणा कर देते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाएगा, हमारी आय बढ़ जाएगी हर क्षेत्र में। जैसे देखिए आप हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी में सालों में लाखों लाखों लोग यहाँ आते हैं। भगवान बद्री विशाल की कृपा है, वो आ रहे हैं, भगवान बद्री विशाल उनको बुला रहे हैं। लेकिन उससे आगे अब हम लोगों को आगे सोचना है कि वो बद्री विशाल तो उनको बुला रहे हैं, वो बुलाने तक ही सीमित न रहें, वो 2-4 दिन रुके। बद्री विशाल की ताकत है कि उनको बुला रहे हैं, उनको मक्खा टिकवा रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत होनी चाहिए कि हम उनको जो है 2-4 दिनों तक यहाँ रोकें।
अभी बद्री विशाल का जो मास्टर प्लान बन रहा है, वो मास्टर प्लान भी हम इसी क्षेत्र में बना रहे हैं कि उसमें हर प्रकार की व्यवस्था करी जाए। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, उनके बच्चों के मनोरंजन के साधन हो, कोई न कोई ऐसे साधन हो, कभी बर्फ पड़ जाती है, कभी यात्रा बंद हो जाती है, तो 2 दिन 4 दिन वहाँ पर आदमी कुछ न कुछ करता रहे। उसके लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माणा गांव पे अब एक जो हमारा दर्शन होता है, जैसे वहाँ बाघा बॉर्डर में दर्शन करते हैं, वहाँ गुजरात में नाडा जेट पर दर्शन करते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे माणा गांव को भी विकसित करके वहाँ पर बनाई जाएगी। आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र बनेगा। जो लोग बद्री विशाल के दर्शन करने आएंगे वह भी आगे जाएंगे। भाइयों बहनों, हम रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ऊर्जा के क्षेत्र हो, उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी पर अभी देखिए, पहले के समय में यहाँ से बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुँचने में हमको कई पूरा दिन लग जाता था, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, और अब आसानी से 7 घंटे में, 6 घंटे में हम लोग बद्रीनाथ तक की यात्रा कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, पर्यटन की किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हमारे प्रदेश का तो जो है पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है। केंद्र सरकार द्वारा जहाँ हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार से, निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारे यहाँ जो आर्थिकी है, जो हमारा रोजगार है, वह भी बढ़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। इस बार की यात्रा, अभी बद्री विशाल की यात्रा चल रही है, 19 तारीख तक चलेगी, लेकिन हमारे तीनों धामों की यात्रा रुक गई है, संपन्न हो गई है। लेकिन इस बार 46-47 लाख का आंकड़ा, यानी कि पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा यात्रा हमारी अभी तक हो चुकी है। प्रदेश में 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और रोपवे, जो गौरीकुंड से केदारनाथ का रोपवे, हेमकुंड साहब से हमारा जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोपवे, इसके बनने से निश्चित रूप से हमारा हर प्रकार का विकास होगा। जहाँ तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यात्री ज्यादा आएंगे, उनकी यात्रा सरल होगी, उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, वो हमारे यहाँ के विकास के लिए लगातार हम लोग तत्पर हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल न होगा, हर दृष्टि से हम नंबर 1 ना आ जाए, जब तक हमारी आदर्श स्थिति न हो, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प हमारा विकल्प नहीं था कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसके लिए हम राज्य के स्तर पर तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार का यह भी उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में तमाम समय से देश को खोखला करने में लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए हर उत्तराखंडी को आगे आना होगा। हर उत्तराखंड के 1,25 करोड़ 1,25 लाख भाई बहनों को आगे आना होगा। जब हम लोग सब लोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम काम करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ प्रकरण आए, भर्ती के प्रकरण आए, दूसरे प्रकरण आए, सारे ही प्रकरणों में हमने त्वरित रूप से कार्रवाई की है। और कार्रवाई यह देखकर नहीं करी है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस ओहदे का है, किसका किससे संबंध है। भाइयों बहनों, हमने कार्रवाई की है तो केवल और केवल न्याय के सिद्धांत पर की है। बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, जो गलत काम करेगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे होगी। जहां भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे वहां पर हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें हमको, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं आप सबका भी आशीर्वाद हमको चाहिए। और हमने जो संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, ये कोई यात्रा किसी की अकेले की यात्रा नहीं है। मैं मुख्य सेवक हूँ, आप सब लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है
आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। जहां हमारे पास यहाँ 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली नदियां हैं, जहां हमारे पास इतने पर्वत हैं, वनों से आच्छादित है, हमारा देव स्थान है, यहाँ की शुद्ध आबो हवा है, हमको प्रकृति ने भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। तो जब प्रकृति ने भगवान ने हमको सब कुछ दिया है तो हमको भी आगे बढ़कर आना होगा, आगे हमको चलना होगा। हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब लोग मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने से नहीं रोक सकती। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर, चूंकि हमारे अनिल भाई नोटियाल जी ने एक बड़ा पत्र यहाँ मुझे दिया है और इन्होंने इसमें काफी सारी बातें लिखी हैं। मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि जो ये मैदान है, ये मैदान हमारा, चूंकि कितने लंबे समय से मेला आयोजित हो रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हर वर्ष आएंगे। ये संख्या आज जितनी ये बढ़ने वाली है, लगातार इसमें वृद्धि होने वाली है, लगातार ये मेला बढ़ने वाला है। तो एक गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और जो गौचर मेला है, इसके सफल आयोजन के लिए मैं, जो इन्होंने कहा, मैं 10 लाख रुपये की घोषणा करता हूँ कि 10 लाख रुपये का वो दिया जाएगा। और जो इन्होंने अस्पताल के बारे में कहा है, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे कि वो सिमली और यहाँ दोनों को मिलाकर किस प्रकार का सामंजस्य बनता है, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा आपने और भी 4 चीज़ें लिखी हैं, मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनके परीक्षण के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और अपना आशीर्वाद आप लोगों ने प्रदान किया, मैं मेले के शुभारंभ की भी घोषणा करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।